सो द मोमेंट हम उस सोसाइटी या उस कल्चर के बॉक्स से निकलकर बाहर सोचते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं जो बाकी लोगों ने नहीं किया है, Hello. So we are all here today on a Saturday afternoon to talk about out of the box career option. Let's see who all are interested in looking at the video. Do comment on your Facebook feed or on the comments below and let me know what do you understand by outside the box. What for you is outside the box career? क्या है ये आउटसाइड दी बॉक्स करियर का मतलब क्या है? क्या समझते हैं आप आउटसाइड दी बॉक्स करियर से? इज इट समथिंग लाइक एक बॉक्स है और उसके बाहर का कुछ करियर, और इट हैज समथिंग सम अदर मीनिंग? क्या मीनिंग है इस आउटसाइड दी बॉक्स करियर का? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. सो टू हैव आउटसाइड दी बॉक्स करियर, व्हेन वी से आउटसाइड दी बॉक्स करियर, जब हम बात करते हैं आउटसाइड दी बॉक्स करियर की, हम में स्टार्ट करना होता है आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग से. अभी आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग क्या है? आउटसाइड द बॉक्स का मतलब है लिमिटेड थॉट्स. एक बॉक्स का स्ट्रक्चर आपने देखा है ना? सो इफ यू हैव सीन अ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉक्स, सो इफ यू हैव बीन लिविंग इनसाइड दैट बॉक्स and you have only seen things happening inside the box and whatever people have done inside that box, and you are not even daring to think कि इसके बाहर भी एक दुनिया है, इसके बाहर भी कुछ हो सकता है, that is outside the box. So for us human beings, that box is our society, the culture that we grew up in. हमारा culture, हमारी society, जो ये हमारे चारों तरफ लोग हैं, that is our box. और हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस बॉक्स के अंदर रहते हैं. हम रहते हैं मतलब फिजिकली तो हम रहते ही हैं. अलॉन्ग विद बीइंग इनसाइड दिस बॉक्स फिजिकली, हम मेंटली भी इस बॉक्स के अंदर ही रहते हैं. मतलब क्या है? वी ऑलवेज स्टे इनसाइड दिस बॉक्स. वी ऑलवेज अंडरस्टैंड एंड बिलीव जो जैसा हमने इस बॉक्स के अंदर रहने वाले लोगों को देखा है, मतलब हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में जिस तरह से हमने लोगों को देखा है, हम वही सीख रहे हैं, हम वही जान रहे हैं, और somehow we think that वही हमारी दुनिया है. हम उतना सा ही कर सकते हैं, हमारे लिए और कुछ ऑप्शंस नहीं है. हम बहुत लिमिटेड वे में सोच रहे हैं. हम ये जानने की कोशिश नहीं करते या देखने की कोशिश नहीं करते दुनिया कितनी बड़ी है, यहाँ कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. हम बस चंद लोगों के सोसाइटी में ही रह जाते हैं. उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंगली वी थिंक एंड वी डू थिंग्स. सो द मोमेंट हम उस सोसाइटी या उस कल्चर के बॉक्स से निकलकर बाहर सोचते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं जो बाकी लोगों ने नहीं किया है, कुछ ऐसा नया सोचते हैं जो नया है, कुछ ऐसा करते हैं जो टेस्ट नहीं किया गया है पहले, समथिंग दैट हैज नेवर बीन टेस्टेड बिफोर, समथिंग दैट हैज नेवर बीन डन बिफोर. अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उसको हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग या वर्किंग आउट ऑफ द बॉक्स और डूइंग आउटसाइड द बॉक्स बोलते हैं. सो एंड जरूरी नहीं है कि आउटसाइड द बॉक्स मीन्स समथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्मार्टनेस. ऐसा कुछ नहीं है. इट इज जस्ट दैट कि इट हैज टू बी डन समथिंग जो हमने लोगों को करते हुए देखा है, उससे कुछ नया, कुछ डिफरेंट. वो बहुत आसान भी हो सकता है, नेट नॉट बी कि वो बहुत डिफिकल्ट और बहुत टफ हो. गेटिंग माई पॉइंट? मतलब आउटसाइड द बॉक्स का मतलब ये नहीं है कि नहीं यार अरे वो बंदा कुछ अलग ही है. नो, कुछ बहुत आसान, कुछ बहुत इजी चीज भी हो सकता है जो हमने कभी उस तरह से अपने आप को देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, और वो बिल्कुल सामने हमारे पड़ा था. लेट्स से कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मैं बताऊं, मैं बोलूंगा खुद को. आई वोंट से कि आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल, बट हाँ, अगर मैं किसी को रिलेट सबसे ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ तो वो मैं खुद को कर सकता हूँ. और मैं आपको बताता हूँ कैसे मैं अपनी जिंदगी को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग अप्रोच से जिया आज तक, और कैसे somehow I have been trying to achieve success, be successful in my own definition. क्या किया मैं? So
व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर, यू नो, एकेडमिकली मैं बहुत बुरा स्टूडेंट था, बहुत ज़्यादा बुरा स्टूडेंट था। और बुरा का डेफिनेशन मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मैं कितना ज़्यादा बुरा स्टूडेंट था। मैं एकेडमिकली बहुत बुरा स्टूडेंट था। तो जब सोचने की बारी आई, जब मैं क्लास 10 में पहुंचा, समहाउ क्लास 9th and 10th में आई केम अप विद गुड मार्क्स बिकॉज मैं थोड़ा मेहनत किया, पढ़ाई करा, आई स्टडीड अ लॉट इन क्लास 9 and class 10 and fortunately I got good marks in class 10th. Now because I got good marks in class 10th, what do we normally do? Agar if you have 80% or 90% plus marks in class 10, what is the natural choice? What is that within the box choice that we make? We go and take science. Nahi, he has got 80% or 90%, so what he has to choose? He has to choose science. So this was my first inside the box selection for my career. I chose science, which was not the best choice for me because I hated studying and science required a lot of study. But still, inside the box thinking, I took science. I did my 11th and 12th, and 12th was a disaster. Very bad marks, extremely poor. I somehow managed to pass. फिर आया कि अब 12th के बाद क्या? Now what to do after 12th? Again, within the box, क्या कर सकते हैं? अच्छा, साइंस था तो मेडिकल में जा सकते हैं, बिकॉज मैथ्स भी ऑप्शनल लिया था, तो इंजीनियरिंग भी शायद कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? तो MBA कर सकते हैं। अभी MBA करने के लिए व्हाट डू आई हैव टू डू? MBA करने के लिए मुझे BBA या BCom करना पड़ेगा एंड MBA की तैयारी करनी पड़ेगी। सो व्हाट वाज द बेस्ट ऑप्शन? कि ओके, लेट मी टेक एडमिशन इन BCom and parallelly I will be preparing for MBA. Now this is all inside the box thinking that all of us do. So the next question that came to us was कि while doing BCom it will not be too much of a thing to study, और MBA का preparation will happen in the final year. तो first 2 years क्या करेंगे? Because BCom will not be very difficult, it is not going to be that difficult. So what to do parallelly? Because I'll have a lot of available time. So then my parents and my cousins and my friends suggested that okay, enroll for CA course, because my family has a lot of chartered accountants. So the first suggestion that comes from everybody is ki do CA. That is a a default choice, inside the box choice कि हाँ चलो CA कर लो. And coming from a businessman community, from a Marwadi community, you would understand that कि it is very easy to choose कि हाँ चलो CA करना है. So that doing CA thing came to me. So I started with my first year BCom and I also parallelly started for my CPT, that is the for CA foundation exams. We had PE1, Professional Education 1 at that point of time. So again inside the box, I started with BCom, I enrolled myself for the CA, and then I thought okay, I'll be doing my MBA after the second year. CA just to do some time pass 2 साल टाइम पास करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे इनसाइड द बॉक्स रहना है, क्योंकि मुझे MBA करना है। आई विल नॉट डू एनीथिंग एल्स। सो आई चोज CA. I started preparing for my CA foundation and I also enrolled myself into BCom. Now because of the support of my seniors and everybody, and because of a little bit of my hard work, I managed to pass my CA foundation in my first attempt. तो अभी CA foundation first attempt में हो गया, बहुत अच्छी बात है। अभी नेक्स्ट क्या? तो CA इंटर आता है भाई। चलो BCom सेकेंड ईयर आ गया एंड CA इंटर आ गया। CA इंटर भी दिया, CA इंटर भी पास कर गया 1 साल में। इधर में BCom भी टुवर्ड्स कंप्लीशन के लिए जाने लग गया। नाउ व्हाट? MBA में एनरोलमेंट करना था। अपना तो ऑब्जेक्टिव था कि अपने को MBA करना है, CA करना नहीं है। सो आई एनरोल माई सेल्फ फॉर द MBA कोर्स, MBA ट्यूशंस, CAT ट्यूशंस, एंड आई वॉज लाइक वेरी बैड। आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन द स्टडी एंड वो CA का ट्यूशन साथ में MBA का ट्यूशन एंड एवरीथिंग गॉट मिक्सड अप एंड MBA चला गया साइड। CA इंटर पास कर गए। अभी क्या है? अब MBA ऑप्शन बचा नहीं है बिकॉज अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा नहीं। एंड CA फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन पास कर लिया, इंटर पास कर लिया, तो अगेन इनसाइड द बॉक्स CA करो। लग गए CA करने। स्टार्टेड डूइंग माय CA फॉर द नेक्स्ट
3 years. After doing CA, I completed my CA in about next 2 or 3 years of time. अब CA बन गए. Now again inside the box thinking, CA बन गए तो क्या नौकरी करनी है, चल पड़े नौकरी करने. बट दिमाग में हमेशा से था कि नौकरी तो करनी नहीं है अपने. आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू अ जॉब. सो एक तरफ स्टार्टेड द जॉब एंड फ्रॉम हियर स्टार्टेड द आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, बिकॉज देन it was me who was thinking for myself without looking at the society, without looking at anybody else, what they have done and what they have achieved and what they have not achieved. Because I had now got a little bit of confidence, I was not able to think for myself, I was not able to decide for myself. My parents also trusted me because now I had passed my CA examination. So now I started thinking out of the box. Now what? I got the job of 6 lakh rupees per annum at one of the big 4 audit firms. What next? Now the outside the box thinking started. Ki chalo, let's start with doing some business, because that audit firm had 5 working days, so I still will have Saturdays and Sundays. So let's start with the business. Papa said, took the capital and started with the business. Now, अभी ये outside the box thinking का सबसे बड़ा problem है that it is very risky. You have to be ready to take a lot of risks also, and especially because my out of the box thinking was about doing a business, so it was even riskier. So I chose to do the business along with the job. 6 months later, I had to leave the job because I wanted to give full time to my business. Because it was not doing very well, I had to leave the job. Because I had invested a lot of money, बहुत ज़्यादा पैसे लग चुके थे और जॉब में सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं हो रहा था. बिकॉज अगर बिजनेस को चलाना है तो उसको फुल टाइम देना पड़ेगा. तो मैं फिर आ गया फुल टाइम बिजनेस करने. 3-4 महीने के अंदर द बिजनेस गॉट क्लोज्ड. फिर क्या, एक ही ऑप्शन बचा है. अगर इनसाइड द बॉक्स थिंकिंग होती तो आई वुड हैव ओनली थॉट, ओके द बिजनेस गॉट क्लोज्ड इनटू अ ह्यूज लॉस, कैन नॉट गो बैक टू माय डैड टू आस्क मनी. I'm a CA, I have to have some ethics of myself. I cannot go back to my parents to ask for more money when I have already lost a lot of money of theirs. तो क्या करें, जॉब करना नहीं है, आउटसाइड द बॉक्स कुछ सोचना है, क्या करे. फिर आया कि भाई चलो प्रैक्टिस करते हैं, एक ऑडिट फर्म स्टार्ट करते हैं. एंड आई गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी विथ वन ऑफ माई अंकल. ही proposed that ki okay beta mera office hai, so take it, do not give me rent, get started with the office. And then that is where now see, I had started thinking out of the box, and audit firm, starting with an audit firm was just वो डूबते हुए कोई तिनके का सहारे का भी जरूरत वाली बात है. So I just caught upon whatever I had, I was able to, because being a CA the easiest option for me was to start with my audit firm because I did not want to get into a job. So I started my audit firm. बट आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना था. ऑडिट फर्म भी नहीं चलाना था, जॉब भी नहीं करना था, कुछ अलग करना था. कुछ अलग हमेशा वो मन में रहता था कि कुछ अलग करना है, कुछ अलग तो करना ही है. तो क्या, तो व्हेन आई स्टार्टेड विथ माय ऑडिट फर्म, आई सॉ कि यार इफ आई कंटिन्यू मेंटेनिंग दिस ऑडिट फर्म, क्लाइंट्स उनके लिए पहले पढ़ाई करो, फिर आके उनका काम करो, पूरा दिन निकल जा रहा है. आई एम नॉट गेटिंग टाइम फॉर माई सेल्फ to think outside the box and do something new and try something interesting, which is where I again started doing a part-time business along with my audit firm that was somewhere connected. Now because of that part-time business, क्या हुआ, I got the flexibility of leaving the audit firm थोड़ा साइड में, because मेरे पास वो part-time business से कुछ revenue आने लग गए थे. Now I was even more able to think more outside the box because अभी मेरे पास थोड़े revenues आने लग गए थे. Now I was able to think a little more outside the box. I started taking less of audit clients and accounting clients. I actually stopped taking any new audit or accounting clients. And I started thinking कि अब और क्या कर सकते हैं. Accounting is my forte because I am a chartered accountant. So let me try getting the US accounting work. You know, उस time पे I had seen a movie बदमाश का company, and that dialogue of it कि हम डॉलर में कमाएं एंड डॉलर में खर्च करें, यू नो, दैट वाज ऑलवेज देयर इन माय माइंड कि मुझे तो डॉलर्स में कमाना है. आई वाज समवेयर
नॉट हैप्पी विथ ये रुपए में कमाने वाला सीन. सो आई started finding out ways कि कैसे मैं I can get US accounting work. So when I started this US accounting work वाली चीज, I got a couple of projects on US accounting. Now again there was a problem that अब US accounting तो मुझे आती नहीं, because US वहाँ के taxation laws अलग हैं. ठीक है, accounting मैं कर लूँगा, but how to take care of the accounting part, the VAT, the income tax. So how to take care of that? So for that, I tried to look for people who can do that because I did not have the time to go back and study because मुझे पैसे कमाने थे. I had got married by then, so I did not have that kind of a buffer कि हाँ अभी हम वापस पढ़ने जा सकते हैं to learn something. So I left US accounting and what I started with was data entry stuff. Now this was something जो मैं कर सकता था. एक्सेल पे एंट्री करना है, एक्सेल पे डेटा एंट्री करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है, पीडीएफ टू वर्ड करना है, कुछ भी करना है कर सकते हैं. तो चलो उससे स्टार्ट करते हैं. बट कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है. that had always been the thought. So I started with those data entry works. I and my wife, by that time I had got married. So that business was going on smoothly. Parallelly I started with these USA data entry stuff. छोटे छोटे डेटा एंट्री के काम. यू वोंट बिलीव इतने छोटे छोटे डेटा एंट्री के काम होते थे. $5, $10, $15 के काम होते थे. एंड हम, आई एंड माई वाइफ निशा, यूज्ड टू वर्क द एंटायर नाइट टू डिलीवर टू द क्लाइंट इन द मॉर्निंग. दैट वाज द काइंड ऑफ मोटिवेशन दैट आई हैड. रात भर काम किया, डेटा एंट्री का काम लेके आए पहले तो यूएस से, फिर उसको किया, फिर उसको सबमिट किया. सो दैट वाज द काइंड ऑफ मोटिवेशन ऑफ बीइंग आउट ऑफ द बॉक्स. सो आउट ऑफ द बॉक्स अगर आपको होना है तो आपको अपने थॉट को 100% आउट ऑफ द बॉक्स रखना होगा. जब भी जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी यू विल हैव टू ग्रैब इट एंड यू विल हैव टू नेवर सरेंडर. कि नहीं वापस इनसाइड द बॉक्स वाले थिंकिंग में चले जाते हैं, वो ज्यादा सेफ है, वो उसमें रिस्क कम है. ऐसा आपको नहीं करना होगा. ऐसा आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा. वॉट एवर द प्रॉब्लम्स आर, आई विल फेस इट, आई विल फेस इट हेड्स ऑन एंड आई विल सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. सो आई स्टार्टेड विद डेटा एंट्री वर्क. फिर से प्रॉब्लम्स आई, फिर से डेटा एंट्री वाला काम ग्रो करना स्टार्ट किया. फिर आई सॉ कि यार डेटा एंट्री में तो देयर इज लिमिटेड ग्रोथ. आई एम एबल टू चार्ज क्लाइंट ओनली एट द रेट ऑफ $5 पर आवर और $7 पर आवर. और क्या कर सकते हैं इसमें. तो आई थॉट कि ओके चलो, जब एम्प्लॉई से जब एक टीम बना के ही काम करनी है तो व्हाई नॉट हायर अ टीम ऑफ better qualified people. So I thought of why not start doing websites, designing and developing websites and software development stuff. So I then started hiring developers. So that is where my IT company journey started. Now when that IT company started settling down and doing good, I then closed off that part-time business that I had started to support my practice. So I then had to sell off that business and I then completely moved to my IT business. But वो out of the box thinking वाला कीड़ा हमेशा से रहा. So out of the box, so IT company start हो गई. चलो now I have 20-25 employee team of 20-25 people doing the website design development stuff and digital marketing and very extremely different things. वो so ये out of the box thinking was also again there. फिर से कहीं से दिमाग में आया चलो एक e-commerce website start करते हैं. So I started buying things from China, delivering to US. Sitting here in India, I took the orders from US, bought products from China and directly got it shipped to US. So again out of the box, 6 महीने तक वो भी बहुत अच्छा चला. But then things did not go on and उसको बंद करना पड़ा. But that IT company kept going and it still is going very good. So out of the box, again जब वो e-commerce business को बंद कर दिया, IT company चल रही थी. फिर after some point I started feeling यार ये तो नहीं चल रहा है, कुछ तो और करना है. Again out of the box, I thought चलो let us start because IT company was a 5-day working company. So I thought चलो let us start with the training institute because that would be an Indian training institute with Indian students. So I will be doing it weekend only. हम सिर्फ सैटरडे संडे को ट्रेनिंग देंगे, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में उसी कॉस्ट में हमारा काम हो जाएगा एंड हम आपसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट. सो आई स्टार्टेड विद दैट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. तो ये अगेन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. तो जब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो गया, आईटी कंपनी स्टार्ट हो गया, आज हमारे पास हमारा आईटी कंपनी है, हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है. एंड नाउ अगेन दैट आउट ऑफ द बॉक्स, तो चलो यूट्यूब चैनल बनाते हैं, चलो वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं, चलो एक किड्स चैनल बनाते हैं जहाँ पे कि आई सिट विथ माई सन एंड ड्रॉ अ लॉट ऑफ थिंग्स.
So that out of the box thinking and out of the box career building has always been there within me, and I have always been working on it. So agar aap, if you also dare to think outside the box, if you can think, you have that thought and ability to think outside the box, and if you can give your 100% to that outside the box career, trust me, you will never look back, and the growth opportunities that you will get will be huge. What those out of the box career options could be, as I said you, inside the box career option for me was being a chartered accountant and getting into an accounting job. Outside the box career option for me was being a chartered accountant but still doing and managing an IT company, managing a training institute where we train not on accounting but we train on software design and development. So that was the out of the box thinking. So that is how you have to think. It's okay if you have done a BTech, it's okay if you have done BCA, it's okay if you have done BCA, but you have to think outside the box. You have to think what I can do other than being a software developer. You have to think what I can do other than being just a software engineer. There are a lot of opportunities in today's time paying a lot more than any generic jobs that we have in the market in the name of accounting or auditing or whatever the general professions are. If you try to specialize and look outside the box career options into digital marketing, into designing, into content writing, into marketing, into so many options, trust me, you just cannot think of, just today, सिर्फ डायरेक्टली आज की बात बताता हूँ आपको. An idea came into my mind कि okay, let us start book writing. Let us start reaching out to clients in US कि we will be writing books for you. I heard it from somewhere. I have a client who does that already. So I thought, why not reach out to clients जिनके लिए हम books लिख सकते हैं, and they will be high net worth clients. तो अगर उनके लिए books लिखेंगे तो उनका हमें software development भी मिलेगा, उनका website design का भी opportunity मिलेगा, उनका marketing करने का भी opportunity मिलेगा. So a lot of things I will be getting. So again I started thinking out of the box. So if you are an out of the box thinker, you will be an out of the box thinker always. So start thinking out of the box. But the biggest problem with out of the box thinking is that it will take you out of the comfort zone. It will always be taking you out of the comfort zone that you are in. And that is why most of us are not able to take or think outside the box. Because that will be the way जो कि हर किसी ने नहीं किया है. आपके भैया या आपकी दीदी या आपके कजन या आपके फ्रेंड्स ने नहीं किया है. आपको कुछ नया करना है तो आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं मिलेगा, आपको असिस्ट करने वाला या आपको बताने वाला कि हाँ बेटा ऐसा होता है कोई नहीं मिलेगा शायद. यू वोंट फाइंड एनीबडी हु विल बी एबल टू हेल्प यू. सो व्हाट वुड यू डू देन? यू विल हैव टू फाइंड योर ओन पाथ. यू विल हैव टू figure out things of your own. You will have to work hard, you will have to study hard, you will have to do things, you will have to try and test things, you will have to be ready to fail. If you are wanting to think out of the box, if you are wanting to choose a career outside the box, you'll have to be ready to fail, and you'll have to be ready to get out of the comfort zone that your seniors or your relatives or your neighbors have built. And because that road is already being traveled by so many people, if you also follow that, the growth rate and the success rate won't be much. But if you think something of your own, if you come out with something creative, something new, you can do miracles. आप बहुत कुछ achieve कर सकते हैं. And that, as I said you about my experience of being out of the box thinking, क्या कर सकता है ये out of the box thinking, आप विश्वास नहीं करेंगे. The kind of confidence it will give you, and the kind of failures it will give you. It will give you a lot of both of these things. So be ready to get the failures, be ready to take on the failures, and be ready to get out of the comfort zone. And your out of the box thinking, your out of the box career opportunities will take you a long distance with great success and with great achievements. If you have any questions, any queries, I am here. You can ask me in the comments below, and I'll be responding you right now, right here. Until then, okay, let's
wait for your comments and questions if you have any. If not, then we'll sign off in 5 minutes. Okay? So friends, for those who do not have questions, do make sure that you are subscribing to my YouTube channel, and you are also following me on Facebook and on Instagram. My Facebook and Instagram handle is @ITZSavank. It is ITZSAWANK. It's Savank. My Insta handle, my Twitter handle, my Facebook handle, all are the same. You can see on the screen below or in the comments below. I'll help you out. And if you ever have any questions, any suggestions that you need, and if that is within my understanding or if that is within my level of knowledge, I will surely be helping you out with that. You know, that has always been my dream, to be able to help as many people as I can from the experiences that I have gained. So if you have any questions about your career, about any queries, do feel free to ask me in the comments below, or email me or call me, whatever options you find you are comfortable with, and I'll be there answering you and helping you all through to be successful. And I will say, for every youngster who is listening to this video, does not matter even if you are not a youngster. I am at 35 and I am ready to think outside the box. So whatever age you are in, if you are ready to think outside the box, I'm there to help you. I'm there to help you with every single step of your outside the box thinking. I'll motivate you, I'll push you, and I'll never ever say you to stop. Best of luck. See you the next time. Have a good day.